हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा यूजीसी नेट सेप्टेम्बर 2013 रो इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन रहइबो। पेपर 3 रो पार्ट 1 रहइबो। एतरे हमें 1 टू 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो और प्रीवियस पार्ट रो वीडियो से देखिना हो प्लेलिस्ट रे विजिट करके देखि परिबो। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करवा। सो ये फास्ट देखिपार पेपर 3 इकोनॉमिक्स और एस हूँ सेप्टेम्बर कोड 01 एंड 13 2013 रो क्वेश्चन। ए 75 क्वेश्चन अच्छी। आज मैं फास्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करवा। आज फास्ट क्वेश्चन, ए फार्म ऑपरेटिंग इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एंड इनपुट मार्केट्स मैक्सिमाइज इट्स टोटल प्रॉफिट व्हेन px is equal to mcx and mcx is rising, और MPA by PA is equal to MPB by PB, और MPA by PA is equal to MPB by PB is equal to 1 by MCX, और MPA by PA is equal to MPB by PB is equal to 1 by MCX is equal to 1 by PX। तो ये से पचारि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आउ इनपुट मार्केट अच्छी। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आउ इनपुट मार्केट रे टोटल प्रॉफिट केतबेले मैक्सिमाइज हबो। मैक्सिमाइज होगापाई तार कंडीशन गुड़िक साटिस्फाई करवा दरकार। MC इज इक्वल टू MR, MC शुड गॉट MR फ्रॉम बिलो। एंड फास्ट अच्छी कौन PX इज इक्वल टू MCX और MCX राइज कर यहाँ कहार कंडीशन ना इट इज हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस, केते प्रोड्यूस हम से आम PX इज इक्वल टू MCX इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मार्केट। दिस एनश्योर द फार्म्स प्रोड्यूस द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। फास्ट ये जो PX इज इक्वल टू MCX से प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट को शो करुँच। सेकेंड MPA बाय PA इज इक्वल टू MPB बाय PB यहाँ कौन शो करुँच हाउ टू एलोकेट एक्सपेंडिचर एमंग इनपुट्स एलोकेशन। सो प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट पर रुपी स्पेंड इज सेम अक्रॉस ऑल इनपुट्स, और MPA बाय PA इज इक्वल टू MPB बाय PB। तापर से दुटा को जब कंबाइन करवा ताहले PX इज इक्वल टू MCX आउ इटा आसीज कौन ना जो 1 बाय MCX PX इज इक्वल टू MCX ताहले 1 बाय MCX इज इक्वल टू 1 बाय PX लिखिपर। ताहले कंप्लीट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ताहले कौन हो MPA बाय PA इज इक्वल टू MPB बाय PB इज इक्वल टू 1 बाय MCX इज इक्वल टू 1 बाय PX। ये कंप्लीट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन को शो करियो। सो ऑप्शन डी ये हो राइट आंसर। कंप्लीट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन ये चारिटा जाक इक्वल हवा दरकार। MPA बाय PA, MPB बाय PB, 1 बाय MCX और 1 बाय PX सब गुड़िक इक्वल हवा दरकार। तो 1 नंबर राइट आंसर डी हो। देन क्वेश्चन नंबर 2 को आसवा। शैडो प्राइस रेफर्स टू, शैडो प्राइस कहले आम कौन बुझा चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट पर यूनिट चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, or change in the value of objective function per unit change in any one of the constant, or the change in the value of the primal solution per unit of change in the dual solution। शैडो प्राइस ताले एठी काहा को शो करिवो शैडो प्राइस शो करिवो चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर यूनिट चेंज इन वन ऑफ द कांस्टेंट। ऑप्शन बी हो राइट आंसर शैडो प्राइस अनुसार। बिकॉज in linear programming each constant has a shadow price also called as dual value। so shadow price जोटा dual value भी कहा जाए। if you relax a constant like adding 1 unit of labor, land or raw material, how much the optimal value of the objective or profit cost will change। so it is purely a marginal change in the objective function because of a 1 unit relaxation of the constant। so शैडो प्राइस refers to the change in the value of objective function per unit change in any one of the constant। किंतु एटारे तार रिवर्स देज तो रिवर्सटा इनकरेक्ट हो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। 2 नंबर गला। देन 3 नंबर को आसवा। इन एन इकोनॉमी ऑफ 2 इंडिविजुअल्स A and B and 2 commodities X and Y जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज इज रिच्ड। तो जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज केतबेले रिच हम जो MRTS XY इज इक्वल टू MRTS YX ना MRTS XY इज इक्वल टू PX बाई PY, और MRS XY ऑफ A इज इक्वल टू MRS XY ऑफ B, और MRS XY इज इक्वल टू PX बाई PY। से कौन कही इन ए 2 पर्सन
टू कमोडिटी इकोनॉमी जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज केतबेले रीच हबो ना जेतबेले MRS XY of A is equal to MRS XY of B हबो ऑप्शन सी रे बिकॉज इन जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज जोटा एजवर्थ बॉक्स कॉन्सेप्ट रे दिया जाइतला ईच इंडिविजुअल डिसाइड्स हाउ मच वन गुड they are willing to give up to get another good. So this willingness to trade is measured by marginal rate of substitution or MRS, and equilibrium is reached when both individuals have the same MRS. दी जनकर MRS marginal rate of substitution same थिबो केमिति ना their indifference curve become tangent to each other and no further mutual beneficial trade is possible, so the allocation is Pareto efficient. तेणुक MRS XY of A is equal to MRS XY of B हवा दरकार जनरल इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रे ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 रो राइट आंसर हम तापर क्वेश्चन नंबर 4 को आसीबा एटी से वाला लिस्ट 1 लिस्ट 2 देसी मैचिंग वाला क्वेश्चन अछि फास्ट अछि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंज्यूमर कैन परचेज वेरियस कॉम्बिनेशन परचेज करि परिबो से तो सेटा वेरियस कॉम्बिनेशन कौन शो कर इट शोज द एफोर्डेबल बंडल्स बेस्ड ऑन इनकम एंड प्राइसेस तार इनकम और प्राइसेस अनुसार से वेरियस जो कॉम्बिनेशन को परचेज कर परियो इंडिफरेंस कर्व तो सेटा नुहे बजेट लाइन यस बजेट लाइन इज योर राइट आंसर वेरियस बजेट लाइन रे से वेरियस कॉम्बिनेशन को परचेज कर परियो तार जो इनकम अनुसार इनकम और प्राइस अनुसार देन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सैटिस्फैक्शन दीटा रु इक्वल सैटिस्फैक्शन दबो सेटा हे जो इंडिफरेंस कर्व ताको कहबा इंडिफरेंस कर्व दीटा रु इक्वल सैटिस्फैक्शन आस्तबो आ बजेट लाइन जोटा प्राइस लाइन भी हमें कहू एटा मैक्सिमम लाइन सेति तार प्राइस थिबो बजेट आ गोटा नेक्स्ट होची ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व सब मिसी गले सेटा को कोन कहै जिवो इंडिफरेंस मैप बोली कहै सब इंडिफरेंस कर्व एमती मिसी गले ताकू कहा जिवो इंडिफरेंस मैप सो इट कंटेन्स मेनी इंडिफरेंस कर्व अरेंज फ्रॉम लोअर टू हायर सैटिस्फैक्शन देन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ ए बजेट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व सो बजेट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जोठी टेंजेंट हबो सेटा को कोन कहा जिवो सेटा को कहा जिवो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एटा बजेट लाइन एटा इंडिफरेंस कर्व तो जो जगह रे टेंजेंट होची सेही जगहटा को कहा जिवो इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोली कहा जाए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन बा इक्विलिब्रियम ताले फर्स्ट रो आसला ए रो 2 बी रो आसला 4 2 4 1 3 2 4 1 3 देखिबा को ऑप्शन लो अछि 2 4 1 3 2 4 1 3 अछि ऑप्शन नंबर ए रे तो 4 नंबर ए हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 5 भी से बला लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अछि देखिबा फर्स्ट अछि रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी देखि देथिले एटा देथिले वाल्कर रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी गिवन बाय वाल्कर आ से कौन कहते ना प्रॉफिट एज ए लेफ्ट ओवर इनकम आफ्टर पेइंग फैक्टर्स पे कर साला पर जहाँ भी किसी रही जीवो सेटा तार लेफ्ट ओवर जहाँ रही जीवो इनकम रो सेटा होची प्रॉफिट एटा रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी जोटा कि वाल्कर कहते देन लर्नेबल फंड थ्योरीटा नॉट विक्सेल कहते फास्ट अच्छी और से कौन कहते ना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लर्नेबल फंड तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या द्वारा डिटरमाइंड हम डिमांड और सप्लाई लर्नेबल फंड रो ता द्वारा डिटरमाइन हो पार देन कंपेनसेशन क्राइटेरियन प्रिंसिपल देते कैल्डर एंड हिग्स कर कंपेनसेशन क्राइटेरियन थिला आ से कहते ए पॉलिसी इज गुड इफ गेनर्स कंपेनसेट लूजर्स जो मैंने गेन कले से मैंने जदि लूजर्स मान को किसी कंपेनसेट करेंगे ताहले पॉलिसीटा को आम गुड पॉलिसी बोली कहबा से तार नाटा अच्छी कंपेनसेशन क्राइटेरिया जोटा कि कैलर हिग्स देते देन सोशल वेलफेयर फंक्शन देते बक्सन सामुएलसन दुई जन मिसिकी बक्सन सामुएलसन आ से कौन मेजर करते इट मेजर्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी यूजिंग यूटिलिटी फंक्शन तो यूटिलिटी फंक्शन के यूज करिकी केमती सोसाइटी वेलफेयर आसूची सेटा से माने मेजर करथिले आ सेटा को ही कह जाउतला सोशल वेलफेयर फंक्शन गिवन बाय बक्सन एंड सामुएलसन सो फर्स्ट रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी वाल्कर लर्नेबल फंड थ्योरी नॉट विक्सेल कंपेंसेशन क्राइटेरियन कैल्डर हिग्स सोशल वेलफेयर फंक्शन बक्सन सामुएलसन A3B1 3142 3142 अच्छे ऑप्शन नंबर ए रे तो ए हो यार राइट आंसर
तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 6 रे एसेसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन अछि एसेसन कहूची एन आइसो कॉस्ट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन से कहूची जे गोटे आइसो कॉस्ट लाइन टा स्ट्रेट लाइन हो ठीक अछि देन रीजन कोन कहूची ना the market rate of exchange between the two inputs is constant. Yes, market rate of exchange between two inputs are constant. So it iso cost line ta straight line is. So an iso cost line shows all combination of two inputs, usually labor and capital, that can be purchased for a given cost. माने सेति की दाम रे से केते लेबर और कैपिटल को परचेज करि परिबो सेटा तार कॉम्बिनेशन आइसो कॉस्ट लाइन रे शो करे and its slope is equal to the ratio of the prices of the two inputs, and since the input prices remain constant the slope remain constant, which makes the iso cost line a straight line. So both statements are true and the reason correctly explain the assertion. So it both are true and it is R is the correct explanation of A. The 6 number right answer A hijo. Then question number 7 भी अच्छी assertion reason 7 कहूची assertion the rate of fall of MR curve is more than twice the rate of AR curve. से कहूची फास्ट रे जो एठी हमें एटा होची AR आउ एटा होची MR curve तो AR जेति की होबा ना तार हाफ होबो MR आउ सेटा फास्ट रे ही कहूची the rate of fall of MR curve is more than twice the rate of AR रो डबल फॉल करिवो MR curve এটা ঠিক আছে ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ঠিক আছে দেন রিজন কোন कहूची ना द MR एंड AR कर्व आर लिनियर एंड नेगेटिवली स्लोप्ड लिनियर और नेगेटिवली स्लोप्ड अछि किंतु सेटा तार रीजन नुहे एटा तार करेक्ट माने एक्सप्लेनेशन नुहे रीजन ता तार करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे तन करी एटा A is true is your right answer because in a linear demand situation the AR curve is straight downward sloping line AR curve ta and MR curve falls twice as fast as the AR curve. So the assertion एठी assertion correct अछि first assertion correct अछि and reason टा एठी incorrect अछि काहे से कहूची जे दीटा जाको कोन हबो linear और negatively sloped हबो सेटा हेइ न पारे तो reason incorrect हेजो because MR falls twice as fast only when the AR curve is straight line. एयर जो स्ट्रेट लाइन हो ही MR ट्वाइस तार फॉल करिवो नॉट जस्ट बिकॉज बोथ आर लिनियर एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग therefore the reason doesn't correctly justify the assertion. So reason एठी incorrect हेइ परिवो बा एटा कहि परिवो R is not the correct explanation of A एटा तो R is not correct explanation of A बा A टा true R false ऑप्शन C को चूज करि परिवो. देन क्वेश्चन नंबर 8 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 8 रे से भला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्ड टू पीक लोड प्राइसिंग अनुसार कोटा ट्रू गोटा में देखिबा. अब पीक लोड प्राइसिंग टा कोन ना इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल पब्लिक यूटिलिटीज नो दिस इज इनकरेक्ट एंड it leads to the substitution in consumption from the period of peak demand to the period of low demand. Yes, peak demand ru low demand पर जो substitution सेटा correct हबो peak load pricing रे. Then it leads to the reduction in consumer welfare. Yes, consumer welfare को ये reduction कर दे थाए. Then it leads to higher consumer welfare during peak period when demand and marginal cost are low. No, it is incorrect. First is incorrect. B and C दीटा होची करेक्ट अछि बिकॉज पीक लोड प्राइसिंग इन्वॉल्व्स चार्जिंग ए हायर प्राइस ड्यूरिंग पीक डिमांड पीरियड जेतबेले जो धर विंटर सीजन चलसी विंटर सीजन ले जो गुड्स रो डिमांड टा पीक रे थिबो तार प्राइस टा अधिक रहइबो आउ समर सीजन ले जोटार अधिक थिबो तार प्राइस अधिक थिबो. देखियो समर सीजन टाइम रे एसी रो प्राइस टा अधिक थाए आउ विंटर सीजन टाइम रे जनरली धर हमें ब्लैंकेट्स कथा कहबा कि जो वुलन क्लॉथ रो कथा कहबा से गुडिकर प्राइस टा अधिक रहिबो कहिना सेटा को ही पीक लोड प्राइसिंग कहा जाय. इट इन्वॉल्व्स चार्जिंग ए हायर प्राइस ड्यूरिंग पीक डिमांड पीरियड टू डिस्करेज एक्सेसिव यूजेस एंड शिफ्ट कंजम्पशन टुवर्ड्स नॉन पीक पीरियड्स. सो एठी हमरो बी it leads to the substitution in consumption from the period of peak demand to the period of low demand. It ठीक अछि and because prices are higher during peak hours and so some consumers are also and suffer reduced welfare.
so it leads to a reduction in consumer welfare. It भी correct हो, and it is not limited to electrical utilities and it doesn't increase consumer welfare during peak period. तेणु करी ए आउ डी टा इनकरेक्ट हो, ताले ऑप्शन डी हो एठी राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 9 को आसीबा. इन द लॉन्ग रन द ऑटोनोमस कंजम्पशन विल, लॉन्ग रन ले ऑटोनोमस कंजम्पशन टा कौन हुए? बी infinity remain unchanged, decline but will remain positive, बी जीरो. तो लॉन्ग रन रे ऑटोनोमस कंजम्पशन टा कौन हुए? ऑटोनोमस कंजम्पशन टा शॉर्ट रन ले जहाँ किसी चेंजेस हबार थिबो हबो, किंतु लॉन्ग रन ले से किसी भी चेंज हबो नाही. सो एटा रिमेन अनचेंज रहिबो राइट आंसर, बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन रिप्रेजेंट द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट occurs even when income is zero, and it reflects basic survival needs and habitat of the household. In the long run, households continue to consume at least this minimum level, so autonomous consumption doesn't become zero and it stays constant unless there is a structural shift in the economy. So long run रे autonomous consumption टा remain unchanged, जहाँ थिला सेमती ही रहिबो, किछि चेंज हबो नै. देन क्वेश्चन नंबर 10 को आसीबा. 10 रो अछि, which of the following statement is not true in case of balance budget multiplier? balance budget multiplier अनुसार कोटा ट्रू नुहे हमें देखिबा. फास्ट देछि, the first round contradictory effect of additional tax revenue or minus b or del t or b is equal to MPC or additional tax revenue is less than the explanatory effect of the additional government expenditure or del g. तो MPC और del g ठारू सेटा लेस देन हबो. यस इटा ट्रू अछि, बिकॉज द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर टा हमें केमती लिखु जो 1/1 minus b and it is larger than the tax multiplier. और टैक्स मल्टीप्लायर टा केते हुए? टैक्स मल्टीप्लायर टा लिखा हिता है जो -b/1 minus b. सो 1/1 minus b टा लार्जर हबो कहा ठारू? -b/1 minus b. इट इज लार्जर देन -b/1 minus b. एटा ठीक अछि फर्स्ट. देन सेकंड होची, the value of tax multiplier for proportional taxes is -b/1 minus b plus bt, or b is equal to MPC and t is equal to tax rate. एठी एटा भी ट्रू होटे, कहना टैक्स मल्टीप्लायर फॉर प्रोपोर्शनल टैक्स इज इंडीड केते -b/1 minus b plus bt. एटा बी नंबर भी एठी ठीक अछि टैक्स मल्टीप्लायर अनुसार. देन सी रे कहूँ द वैल्यू ऑफ बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर इज यूनिटी व्हेन टैक्सेस आर लमसम टैक्सेस. यस लमसम टैक्स हेले सेटा यूनिटी बा इक्वल टू 1 हम, माने व्हेन हम कहि परिबा जे जेतोले del g इज इक्वल टू del t मींस लमसम टैक्सेस इक्वल हेले टैक्स आउ गवर्नमेंट रो जो g आउ t दिटा चेंज टा जदि लमसम टैक्सेस ऊपर हम ताले बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर टा सेटा इक्वल टू 1 हम. सो ऑप्शन सी भी एठी इनकरेक्ट अछि. सो से पचारछि कोटा नॉट ट्रू देछि, तो ए सब गुडा ट्रू ओटे, तेणु करी नॉन ऑफ दिस हिजबो राइट आंसर. एमती भी किछि आंसर आसी पारे. सो ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस हिजबो राइट आंसर, काइना ये सब गुडी को राइट ओटे. 10 गला. तापर 11 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. 11 रे कहूँ जे फॉर ए स्मॉल इकोनॉमी in a flexible exchange rate system that begins in the long run equilibrium point, a higher rate of inflation in the short run will be followed by. short run ले जदि higher rate of inflation हबो ताले ता द्वारा कौन हबो? an increase in the exchange rate and decline in net export. yes exchange rate ता द्वारा बढ़िबो, exchange rate रे increase हबो and net export टा decline हबो, export decline हबो. एटा ही करेक्ट हे जिवो, because when domestic inflation rises compared to foreign inflation, domestic inflation जदि rise होची ताले कोन हबो ना domestic goods become more expensive than foreign goods and demand shift towards imports. लोक डिमांड अधिक करिवे, इंपोर्ट अधिक करी काइना डोमेस्टिक गुड रो प्राइस अधिक हो जाइछि and domestic currency loses value compared to foreign currency and the exchange rate rises or price of foreign currency increases. As a result, exports fall and import rise, causing net exports to decline. net export ता द्वारा कोन हबो
डिक्लाइन हम तो सीटा ही कह जे डिक्लाइन इन नेट एक्सपोर्ट 11 नंबर राइट आंसर ए हो। देन क्वेश्चन नंबर 12 को आसवा 12 कौन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज जीरो व्हेन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट केते हेले मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट केते हेले स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनीटा जीरो हो जीरो केतेबेले हबो ना जेतेबेले मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द क्रिटिकल रेट or more than the market rate of interest but less than the critical rate or less than the market rate of interest or lowest. So market rate of interest जेतेबेले more than critical rate ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ speculative demand जीरो ହେଇଯିବ କାହିଁକି ना according to Keynes people hold money for speculative motive only when interest rates are low because they expect bond price to rise and when the market rate of interest is higher than the critical rate people expect the interest rate to fall in the future and bond prices to rise so they prefer to hold bonds instead of cash which makes the speculative demand for money zero तो speculative demand for money टा सेठी zero कर दबो तो 12 नंबर राइट आंसर ए हे जबो देन क्वेश्चन नंबर 13 को आसीबा 13 ले कहूची जे a positively sloped aggregate supply curve indicate that positively sloped aggregate supply curve बुझे एग्रीगेट सप्लाईटा पॉजिटिवली स्लॉप्ड एग्रीगेट सप्लाई कर्व कौन इंडिकेट करुछि एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल बी एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल एंड नो चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट ना एटा एग्रीगेट डिमांड कथा देछि एठी एग्रीगेट सप्लाई कर्व देछि तो तार सहित तार लिंक होनी काना सेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए देन एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज इन बोथ द प्राइसेस लेवल एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट yes prices level और equilibrium output दीटा जाक increase हेले aggregate supply टा कौन हम ना upward sloping हम because a positively sloped aggregate supply curve represent the intermediate range of the economy and in this range output is not perfectly flexible nor at full capacity therefore output increases when aggregate demand rises and price level also increases due to rise in production cost so both price level and output राइज टुगेदर जोटा कि ऑप्शन बी रे अछि 13 नंबर बी हे जो राइट आंसर देन 14 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द कैपेसिटी क्रिएटिंग एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ थ्योरी वाज एम्फासाइज्ड बाय कैपेसिटी क्रिएटिंग एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ थ्योरी एटा किए देथिले आरएफ हैरो ना ईडी डमर ना आरएम सोलो ना पीए सैमुएलसन सेटा डमर कर मॉडल थिला हैरो डमर जो थिले डमर कर मॉडल थिला ईडी डमर देथिले हैरो डमर मॉडल बोथ इकोनॉमिस्ट रिकॉग्नाइज द डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट क्रिएट्स डिमांड बाय इंक्रीजिंग स्पेंडिंग एंड इट क्रिएट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी बाय एडिंग टू कैपिटल स्टॉक बट डमर specifically highlighted the capacity creating aspect of investment showing that investment must grow at a rate sufficient to absorb the new productive capacity तेणुकरी जो कैपेसिटी क्रिएटिंग एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेटा स्पेसिफिकली डमर देथिले सो ई डी डमर इज राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ एक्युमुलेशन गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन जोटा मिसेस जुआन रॉबिन्सन देथिले सेटा कोटा ट्रू नुहे नॉट देछि फर्स्ट होछि इन्वेस्ट योर प्रॉफिट कंज्यूम योर वेजेस से प्रॉफिट को इन्वेस्ट करिवो आ वेजेस को कंज्यूम करिवो ना एटा तो तार सहित किसी लिंक नहीं जो गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज आउटपुट द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन आउटपुट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू आउटपुट यस सेटा ठीक अच्छे बी ठीक अच्छे देन सी सेविंग रेशियो शुड बी इक्वल टू द इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल यस ये दुटा ठीक अच्छे because the golden rule of capital accumulation from solo growth model states that steady state consumption is maximized when MPK is equal to N plus delta and interpretation based on this rule जो B and C these are linked to mathematical and economic explanation of golden rule and A इटा कौन करछि ना this represent Caldor classical based saving rule not the golden rule of solo तेणुकरी A is not an interpretation of golden rule and option A सी पचारछि not an interpretation ताले एठी राइट आंसर हेजो ऑप्शन नंबर A 15 नंबर तापर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 16 ले कह जाउछि
The rational expectation hypothesis doesn't imply. Rational expectation hypothesis रे कोटा imply करे नहीं. First, people do not make systematic errors. ना इटा imply करे. Then on an average the economy will be closed to long run average supply curve. Yes, सेठी को जीवो LSE को जीवो ठीक अछि. Then policy makes have better information about the economy than other economic actors. No, policy makers पाखरे एते better information न थाए माने other economic actors मान को पाखरे अधिक information थाए तो एटा incorrect हे जीवो. Then macroeconomic policy changes most came as a surprise in order to have an impact of the real economy. Yes, एटा true होता है. A, B and D तीनटा true अछि. केवल C टा false अछि because rational expectations theory assume that economic agents use all available information efficiently and are on average as well informed as policymakers. So the theory doesn't imply that policymakers holds better information. So it is our gola A, B and D. These are aligned with rational expectations. Agents do not systematically add the economy stays close to the LAS curve in the long run and only unexpected policy can affect real variables. So option C, okay, option C is your right answer. Then question number 17 को आसीबा. 17 रे दिया जायछि जे which of the following are true of disguised unemployment. Disguised unemployment अनुसारे कोटा true अटे. Disguised unemployment माने कोन जानिथिबो इंडियन इकोनॉमी रे पढिथिबो. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सेटा होची ओडिया रे छद्मवेशी बेकारी माने एग्रीकल्चर रे आवश्यकता ठारू अधिक लोक काम रे लागिथिबे जहार मार्जिनल यूटिलिटी जीरो ही थिबो. जदि 10 जन लेबर काम करचंती 5 जन लेबर दरकार तो से जगह रे 5 जन लेबर को काढी देले भी किसी फरक पड़े नाही प्रोडक्शन में. तो सेमन को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहै छै. तो ता अनुसार कोटा ट्रू. इट रिप्रेजेंट पोटेंशियल सेविंग. यस, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट occurs more workers are employed than required, so especially in agriculture. And since first ताले potential saving को दर्शाए and the marginal productivity of labor is zero or extensively low, marginal productivity low रहिबो and it is due to the existence of joint family system. Yes, joint family रे agriculture रे बहुत आवश्यक ठारो अधिक लोक काम करंती and it is confined to the rural areas. केवल एटा रूरल एरिया को कन्फाइंड होगी न थाए. तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया रे भी देखा जाई पारे. सेमती नहीं कि जे खाली रूरल एरिया रे देखा आमे कहि परिबा माने जेहेतु रूरल एरिया रे एग्रीकल्चरटा हुए तो मैक्सिमम पार्टटा रूरल एरिया रे देखा जाए किंतु अर्बन एरिया रे भी सेमती नहीं कि एग्रीकल्चर हो नहीं. तो अर्बन एरिया रे भी सेमती फार्मिंग होउची तो से जगह रे भी देखा हवार पॉसिबिलिटी अछि. तो से कहले जे केवल इट इज कन्फाइंड टू रूरल एरियाज. दिस इज नॉट ट्रू. But 1, 2, 3 is your right answer because disguised unemployment occurs when more workers are employed than required, especially in agriculture, and since extra workers contribute almost nothing to output, then marginal productivity becomes zero. And removal of excess workers could save resources. Resources save करिवो जदि आमे excess worker को बाहर कर दोचे तो सेटा को आमे potential saving बोली कहि परिबा. And joint family system can support unnecessary workers without affecting livelihood. So statement 3 be correct रहिबो and it is not confined only to rural areas since urban disguised unemployment also exists. and करी for number टा को हम काटि परिबा. So option C is your right answer. 1, 2, 3 17 रो. Then question number 18 को आसीबा. According to A.K. Sen, अमर्त्य कुमार सेन, feminism occurred in India because of हमर जो इंडिया रे फेमिनी बा दुर्भिक्ष देखा हितला तार कारण कोन. lack of proper distribution mechanism. Yes, proper distribution mechanism देखा दे नथला सेतबेले. lack of demand, lack of transportation, storage, shortage of food grains ना एटा होची सबडो माने मेन रीजन. lack of proper distribution of mechanism because Amartya Sen through his entitlement approach argued that feminism are not due to shortage of food but due to failure in the distribution and entitlement system. Even when food is available, people cannot access it because of absence of proper distribution. खाद्य थिले भी जदि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन न हो पारछि ताले लोक से गुडी को पाई परिबे नाही. तो मेनली प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लो प्रॉब्लम पई फेमिनिस्ट देखा जाय बोली अमर्त्य कुमार सेन कहितले. सो 18 नंबर राइट आंसर ए हि जिवो.
देन क्वेश्चन नंबर 19 को आसीबा 19 ले कहूँ कि इन इंडिया 5 ईयर प्लान इज फॉर्मुलेटेड बाय इंडिया रे 5 ईयर प्लान को किए फॉर्मुलेट करे सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नो प्लानिंग कमिशन यस प्लानिंग कमिशन होगा राइट आंसर कहीं 5 ईयर प्लानटा जो आमर 1951 रो स्टार्ट है 2017 पर्यंत थिला तापर 2015 ले तो नीति आयोग आसीगला तापर सेटा डिजल्व होगी नीति आयोग कार्यकारी करुचे एबे बट सेटा प्रथमे 5 ईयर प्लानिंग टा फॉर्मुलेट करथिला प्लानिंग कमिशन कि फ्रॉम 1951 टू 2017 और 2014 पर्यंत चलिला प्लानिंग एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज framed by the Planning Commission of India and in 2015 it was replaced by Niti Aayog National Institute of Transforming India and 5-year plans were discontinued. Therefore during the period when 5-year plans existed the Planning Commission was responsible for preparing and approval. So option B 19 number option B is your right. Then question number 20 को आसीबा in which year the wildlife board in India was established. वाइल्ड लाइफ बोर्ड केबे एस्टाब्लिश है इंडिया रे वाइल्ड लाइफ बोर्ड एस्टाब्लिश 1952 68 86 ना 92 एटा एस्टाब्लिश होइतला 1952 रे सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बिकॉज द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वाज सेट अप इन 1952 टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड पॉलिसी. Later, the National Board for Wildlife replaced it under the Wildlife Protection Act. So, 20 A is your right answer. Then question number 21. Indian planning mechanism was criticized by. Indian planning mechanism को किए क्रिटिसाइज करथिले अमर्त्य कुमार सेन, जगदीश भगवती, एल.के. झा ना बिमल जलान. The Indian planning mechanism को क्रिटिसाइज करथिले जगदीश भगवती. Option B is your right answer. And economist Jagdish Bhagwati criticized the Indian planning system for excess government intervention. तांकर जो excess government intervention रहितला सेतिपई से ताको क्रिटिसाइज करैतले and import substitution and restrictive licensing ए सब बाय and he argued for market oriented reform and trade liberalization. तो ए सब ऊपर से कहितले जोटा कि 1991 रे एलपीजी पॉलिसी रे आसीगला. सो 21 रो राइट आंसर बी हे जो. Then question number 22. आम आदमी बीमा योजना प्रोवाइड सोशल सिक्यूरिटी टू डेस कहाँ को या द्वारा सोशल सिक्यूरिटी मिल पार्छ. आम आदमी बीमा योजना ऑल लेबर्स इन द रूरल एरियाज ना ऑल लैंडलेस लेबर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज ना ऑल लेबर इन अर्बन एरियाज ना ऑल लेबर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. तो ये जदि आम देखा अर्बन एरियाज लेबर को तो कहजी रूरल अर्बन बोथ तो हम ना तो ऑल लेबर इन रूरल एरियाज हेनी. आम आदमी बीमा योजनाटा केवल लैंडलेस लेबर जो मैंने अच्छा बिलो पॉवर्टी लाइन रे रूरल एरिया रे तांको मानक पई ही एप्लीकेबल रहिबो. सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बिकॉज द आम आदमी बीमा योजना प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू लैंडलेस रूरल हाउसहोल्ड्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इंक्लूडिंग एक्सीडेंटल डेथ डिजेबिलिटी एंड स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रेन ये सब प्रोवाइड करा जिवो जो मानकर लैंडलेस लेबर अच्छा. देन क्वेश्चन नंबर 23. अच्छा 23 रे देखो प्लानिंग अनुसार देछि को प्लान रे कौन सब टार्गेट निया जाइथिले. फास्ट 5 ईयर प्लान रे कहा को इंपोर्टेंस दिया जाउथला एग्रीकल्चर को. फास्ट 5 ईयर प्लान रे एग्रीकल्चर को ही इंपोर्टेंस दिया जाइथिला एटा ठीक अछि. टू रिबिल्ड द इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस फास्ट एग्रीकल्चर उपर इंपोर्टेंस दिया जाइथिला. तापर सेकेंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल थिला और सेटा हेवी इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स को लेके हेतिला. तो सेकेंड 5 ईयर प्लान रे हेवी इंडस्ट्रीज को एम्फासिस करा जाइथिला. और फिफ्थ 5 ईयर प्लान रे पॉवर्टी रिमूवल बाय एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो गुड गरीबी हटाओ से सब प्लानिंग फिफ्थ 5 ईयर प्लान रे थिला. लग्जरी आइटम सेटा कोथरे नाही एमती भी तो ऑप्शन रे नाही. तो फास्ट एग्रीकल्चर सेकेंड हेवी इंडस्ट्री फिफ्थ 5 ईयर रे एंटी पॉवर्टी बा पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम गरीबी हटाओ. सो सीरियली एठी करेक्ट अच्छे ए रे आई 2IB 3IC. सो एठी ऑप्शन एटा इज योर राइट आंसर कहीं एटा क्रोनोलॉजी अनुसार ठीक रे ही अच्छे. 23 गला. देन 24 नंबर क्वेश्चन. व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रे लोएस्ट महाराष्ट्र गोवा गुजरात केरला सबुति हाएस्ट अच्छी. लिटरेसी रेट अदर ये
मैंने सेक्स रेशियो अदर सब हाएस्ट अच्छी आईटारे लस्ट माने से भल स्टेज अच्छी इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट रे शिशु मृत्यु हारटा तार कम हो सो केरला ये राइट आंसर हो 24 देन क्वेश्चन नंबर 25 को आसवा 25 अच्छा एसेसन एंड रीजन वाला अच्छी फास्ट एसेसन कौन कौन एसेसन हूँ इन द एग्रीकल्चरल lending mechanism of India money lenders despite their serious rates of interest are still predominant yes एबे से predominant କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇକି ବି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ତ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ନା ଆଗରୁ ତ ସେଇଟା ଟ୍ରୁ ଅଟେ ଏସେସନ୍ ଟ୍ରୁ ଅଟେ ଯେତେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ so money lenders still dominate rural credit because they provide instant loans with flexible procedures no paperwork and personal relationship with borrowers ତେଣୁକରି ଏତେ ସବୁ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନ ଯାଇକି ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ସ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପେପର ୱାର୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି ବହୁତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ସ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଏସେସନ୍ କରେକ୍ଟ ଅଛି ରିଜନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫନ୍ ଦ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ମିଟ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଫ୍ 18% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଫର୍ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ନା ସେମିତି ମାନେ ନୁହେଁ ବି ଡଜଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଏ କାହିଁକିନା ଏଠି ରିଜନ୍ଟା ଏସେସନ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲା ନାହିଁ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ commercial banks sometimes fall short of the 18% priority sector lending target for agriculture but even if banks fail to meet the target the main reason farmers depend on money lenders is accessibility quick loan disturbance and informal terms not just banking credit shortfall ତେଣୁକରି ଏଇଟା ତାର କରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ନୁହେଁ ରିଜନ୍ करेक्ट कहीपर कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ नुहे सो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो 25 रो राइट आंसर बी हो भाव में आज आम 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस कर आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आदि किसी डाउट भी रोचे ओपनली कमेंट कर मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करूँ तो नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।